So FRM, it's Financial Risk Manager. It's a certification Mm. by GARP, Global Association of Risk Professionals. It has two levels, part Okay. one or two parts, part one Huh. and part two. So part one happens Mm. twice in a year, May and November, and Mm. likewise part two as well. I think you can't take both parts at the same time. Back in the day when I was preparing, then you could take both of them. Mm. Although I took them at a difference. matlab, I took first in November and the second in following November. But Okay. usually one happens in May. I mean, it's enough time for you to prepare. You can take one in May and then the other one in November. So that's how it goes. Mm. And it's not that expensive either. I think within $1,000, which is like 80,000 bucks, you should be able to, if you clear Mm. both the exams in one attempt, you should be able to get the certification. Mm. So I Okay. have a charter. So Mm. specifically talking about the first part, it is pure fundamentals. So you should already be covering a lot of it in your So first. basically, how much time it takes to cover part one? Huh? How much So it time it has, takes to cover okay, part one? I have the material for 2023. I can share that with you. It has four books. Mm. Each book is around 200 Okay. to 50 pages. I would say the first, if you dedicatedly spend 5 to 6 hours every day, then I think within a month you should be able to do. Mm. Uh, I mean, Okay. do it once, maybe earlier as well. Mm. So I was able to do the first Mm. book in 2 days, 2 3 days max, and then second book also. Matlab, in essentially 3.5 weeks, I could do the syllabus once, and then I revised once, twice, and then I started taking Mm. papers and all. Mm. Um, Mm. because the material isn't such. And Mm. then I started taking all the test papers and all, and I started getting less marks. So I got tens. So I started Okay. studying some more. There is Bionic Turtle. So you can go log in on Bionic Turtle. They have FRM groups there. And you can also, I think David Harper, he has really good videos on YouTube. So you can visit those videos as well. And they are self-explanatory. So you'll get more confidence. And the more exams you take, the more confident you will be Mm. on your ability to clear. But Mm. essentially, like first exam is really basic. So I did some preparation, and then after that I did some Mm. mock tests, and I think I got Mm. 1 1 1 2. So there are four subjects. So let me. So there Okay. is the first one is fundamentals or foundation to risk management. Then there Mm. is valuations. Mm. Then there are, let me check. Just give me a second. Yeah, foundations of risk management. Then there Mm. is recent download. Valuation and risk models, quantitative analysis, and financial markets and products. Mm. Okay. Quantitative analysis. Yeah, valuations and risk models. And what's the fourth one? Financial markets and products. So is anything common with CFA? Uh, actually, so if you clear the first one,
ये if you can Hmm. clear the first part, then you will be able to clear CFA 1 as well. Okay. Okay. So मतलब common है. Exactly, Hmm. it's difficult for me to actually put a percentage, but this has a lot of, Hmm. I think 60% should be common. So Okay. if you clear FRM part 1, then you should be able to clear CFA Hmm. part 1. If you clear FRM part 2, you should be able to clear CFA part 2. CFA part 3 का मुझे पता नहीं. क्या CFA का थोड़ा करिकुलम जो है वो एक्सटेंसिव है. उसमें तो एथिक्स Vast. वगैरह पे ही, हाँ एथिक्स वगैरह Hmm. पे बहुत कुछ है. सो देर इज़ वन बुक कम्प्लीटली ऑन एथिक्स. सो Hmm. बट there is a lot of overlap. So again, there is a divide, which one is better, this and that. But Hmm. I think CFA is very, if you want to go into investments, equity research, this and that, then it is a course Hmm. for that. But if you want to go Hmm. into, so there is a lot of work on Basel, uh, then liquidity, funding, uh, Hmm. financial resources as such. So there, Hmm. FRM helps. So in my last 4 years or so with HSBC, Hmm. there was a lot of overlap Hmm. in what I had learned in FRM. Obviously, what Hmm. when you work in an organization that, and as compared to what you study, they Hmm. what you study is just maybe 30% or 35%. In job, there Hmm. is always an extension of what you study, theoretical concepts. Hmm. But your basics, if you are very clear of the basics, then it becomes very easy Hmm. for you to pick up the complex stuff. So I'm just thinking, let's maybe have this as a introductory call or something. And then if you Hmm. think this makes sense, because I'm Hmm. just conscious if internships are a fight, and Hmm. though you'll be able to get a certification from here as well as you can try from some Hmm. other place as well. But if offline work is not Hmm. something that anybody can guarantee at this point in time, that at least learning, you can take care of the learning aspect. So that Hmm. is what I'm Hmm. thinking. All right. Hmm. So these are the four books. There is some weightage. Again, I would say once you start reading, you'll realize that I think 30% to 40% of each book is quite basic, Hmm. especially for the Okay. first part. Uh, so it's not that difficult at all. Okay. And second part, First, we have to obviously, register for this, no? you have to register. So you have to register, and but I would say you are in Feb right now. Hmm. Don't aim for March. Hmm. Hmm. Maybe aim for November because Feb is almost done. Okay. Uh, Hmm. and then you have 2 months. So 2 months might not be sufficient Hmm. for you to prepare, manage your college placements, and Hmm. along with Hmm. that, some internship work. Hmm. And then you have exams as well, and you'll have to take mock interviews. Sorry, So because you'll in have to the take mock duration of tests. interns, Sorry. internship duration, I will have ample amount of time. So I think that will be sufficient for my preparation. And in that period, But when do you have internship? I mean, so what are you suggesting? May or November? April to June, April to June. Okay, April to June, you'll have enough time, Hmm. is what you're saying. Yeah, But I yes. am say, but I'm saying that April, the exam will be in May or in November. So you aim for Okay. November only. Hmm. Okay, Okay. so for now, you just Hmm. focus on maybe what we are discussing and then take a call around April if you have covered something. Anyways, I'll share the books with you. The only thing is that these are as of Hmm. 2023. So there is some 5% revision every year that GARP does in order to stay relevant. Otherwise, if everybody has the material, then Hmm. I mean, they have no value add. So they keep changing 5% every year. So there will be some case studies from 2024 which will come in 2025. There will be something on AI, Hmm. signature bank, this and that. ये सब होगा.
but usually the core stuff remains the same because these are regulations also, so they don't change a lot. Okay. Okay. All right. So maybe today we'll just go through the very basics of risk. So the different types of risk on credit risk. I'll write some components. TAD, PD, LGD, EL, and okay, then market risk components, VAR, SVAR, and expected shortfall, liquidity risk, funding risk, operational risk. Then there is some business and strategic, and uh, reputation risk. So the last two are essentially you can very well understand. So these can't be, you can't have a model for business risk or strategic risk. So यहाँ पे basically क्या है? Suppose there is a company that so a bank, the core business for a bank is banking, right? Selling banking products, getting deposits, giving loans, doing investment banking, corporate commercial banking, wealth management, and all of that. But if it starts to create its own IT, okay, if it starts to create its own technology, then it is not, or if it does some core banking implementation, that is not a business that a bank engages in. So the core business is banking. Okay. So what it does is that it offloads it to a client. Say it'll hire Infosys or TCS or any of the other services companies, and it'll give this task of setting up core banking or something to them. Okay, and it'll kind of transfer that risk to them. So that is in a way, what it is doing is it is keeping the business risk with itself. Okay, the work that I do, I am good at doing because that is my bread and butter, that is my business. I keep that risk with me because I best know how to manage it, because I best know how to run my business. But I do not know, yeah, IT implementation, all of that, how to do it. So I outsource it to a services company. So that is managing business risk or strategic risk. Strategic risk could be having a long-term strategy or a short-term strategy. So at times doing a tactical fix. Uh, so that is like, okay, a strategic change might take a lot of time, might take 2 years for the strategy to be implemented from top down. But I can have a tactical approach. I can have a quick fix. I can risk accept things. So that would mean it's a strategic risk. And reputation risk, again, a lot of banks you'll see, you will see their offices, but you will not see any branding. For example, some banks you'll see their branding. Okay, but some banks which do not have retail business in India, they will not have their branding. Okay, so for example, you try and search for Goldman Sachs. So Goldman Sachs doesn't have retail operations in India. Okay, in fact, in most countries, it is an out and out investment bank. Okay, and investment bank is there is at times a lot of media attention. Okay, so such to avoid such instances where there is a media car parked outside. So I mean, and there are all people taking pictures and all. In the background there is a bank's logo. So Goldman Sachs, there is hardly any place you would see their logo showing up anywhere. Okay, because they are very much concerned about their reputation. Likewise, there are some banks which have retail presence, so they are not to, I mean, obviously they are also concerned about their reputation.
But reputation risk is essentially what I'm trying to get at is in order to ensure that your reputation is not at stake. For example, you would know some time back, Chanda Kochar and Deepak Kochar, they were alleged in false practices while Chanda Kochar was the CEO of ICICI. Yes, Okay, yeah. so she was removed from her position, and there was also allegations on her for allegedly engaging with some of the companies of her husband. So that is why she was removed from the board. So that is ICICI managing its reput or keeping its reputation intact. Okay, because there was an individual who was posing a lot of threat to ICICI's reputation. So they managed their reputation by uh, removing her from the board, by removing her from any position that ICICI held, that she held at ICICI. So this is reputation risk. Now, these are, it's difficult to quantify these risks. Okay, you can't put a number against them. To some extent, even operational risk, it is difficult to quantify. The reason is operational risk is, for example, risk of a theft or a robbery or an IT systems failure. Okay, या जैसे डॉट कॉम में हुआ था ना कि 1999 के बाद 2000 आएगा. सो सिस्टम वाज constructed in a manner, it had only 16 bits, so it could only keep 2. So 99 के बाद it will be 00. Now that will be 2000 or 1900, वो नहीं पता था. तो ये भी हो सकता है कि वो 2000 हो, ये भी हो सकता है कि वो 1900 हो. So that was an IT risk which falls under the category of operational risk. If there is any internal person in the organization who's committing a fraud or is doing some money laundering and all, so those all come under operational risk. Again, there is no uh, I think I mean there are models to measure operational risk, but they are very crude and very rudimentary. It is not a very जैसे we'll cover in these 4 risks. यहाँ पे you can put a dollar number and say with confidence that okay, this is the amount of risk. You need to keep this much capital in order to ensure that your risk is manageable. यहाँ पे सब थोड़ा बहुत हवा में है. मतलब यू कैन कीप एनीवेयर बिटवीन 100 million to 10 billion. ठीक है. सो ये 3 नॉन कोर रिस्क हैं. I won't say this is non-core. These two definitely are non-core. Operational risk is just the only thing is that it's difficult to measure it with accuracy. Okay. So now coming to credit risk, वो market क्वान्टिफाई risk. नहीं किया जा सकता. Exactly. Quantify मतलब आप कर लोगे बट उसको you can't say with certainty कि हाँ ये ठीक quantify किया है. वो थोड़ा हवा में ही रहेगा. ठीक है. So now 4 key risks are credit risk, market risk, liquidity risk, and funding risk. So as I have a hard stop in maybe 10 minutes. So uh, let's see how much we can cover. ठीक है. I have a call at 10:30. So credit risk से शुरू करते हैं. Credit risk credit risk is the risk of loss of a counterparty defaulting on its obligation. So, for example, you go to a bank and you take an education loan. Okay. So, education loan is collateral free. ठीक है ना? So, education loan is collateral free. There is no collateral. I mean, they might have asked कि okay घर के पेपर दे दो, ये दे दो, वो दे दो. But it is more like a guarantor. Okay. So there is no real collateral that if they are going to pay 10 lakhs, then you have to pay 1 lakh or 2 lakh. Mostly 90% तो बैंक ही दे देता है. Now, what will happen if you fail to repay? Suppose you say कि extra, I mean, I'm just giving a hypothetical situation. Say let's not take Ritik, कोई XYZ बंदा है, उसने लोन लिया एजुकेशन लोन बैंक से और उसके बाद उसका जॉब नहीं लगा. वो बोलता है मैं कहाँ से रिपे करूँ, मैं नहीं कर सकता. तो बैंक कैसे रिकवर करेगा?
ठीक अगर है। वो कोलेट्रल होगा उसके पास तो वो कोलेट्रल सेल कर देगा उसको। नहीं और तो अगर नहीं कोलेटरल होगा नहीं है तो तो, फिर नहीं मतलब ठीक है। तो इंश्योरेंस ओके। सेटअप करवा। रिकवरिंग रिकवरिंग पे बाद में आएंगे। सो दैट इज द रिस्क। एक हम्म, पॉइंट के लिए तो रिस्क है ना। पर्सनल लोन है, हम्म, सपोज पर्सनल लोन है, 4 लाख का, 3 लाख का, वो हम्म, बोलते हैं कि आपका ये बैंक स्टेटमेंट है, आपका ये क्रेडिट स्कोर के हिसाब से आपको इतना पर्सनल लोन मिलेगा। हम्म, तो पर्सनल लोन में 3 लाख रुपए, पाँच हम्म, लाख रुपए के लोन में कोई क्या कोलेटरल रखवाएगा? हम्म, 5 लाख रुपए का अगर मैं कोलेटरल रखवा सकता हूँ, मैं क्या, मैं 20 लाख की गाड़ी कोलेटरल दे देता? ठीक है। सो हम्म, हम्म, दैट इज नॉट पॉसिबल ना। सो पर्सनल लोन इज कोलेटरल फ्री। सो देर इज अ हम्म, रिस्क दैट द काउंटर पार्टी, मतलब मैं डिफॉल्ट कर सकता हूँ जो मैंने लोन लिया है उस पर, हम्म, एंड दैट रिस्क रेस्ट्स विद द बैंक। मेरा क्या नुकसान है उसमें? मेरा नुकसान ये है कि अगर मैं रीपे नहीं करूंगा तो मेरा क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा, मेरे को बाद में कभी लोन नहीं मिलेगा। ठीक है। हम्म, बट वो भी हम्म, रिकवर हो सकता है। उसमें क्या होगा, नेक्स्ट टाइम व्हेन माय इकोनॉमिक कंडीशन इज गुड, ओके, आई हम्म, गेट अ न्यू जॉब, मेरे को सैलरी आनी शुरू हो गई, हम्म, मेरे को एक क्रेडिट कार्ड मिल गया, डिफॉल्ट क्रेडिट कार्ड, हम्म, ठीक है, जिसमें हम्म, उन्होंने कोई क्रेडिट हम्म, चेक नहीं किया। जैसे सपोज मैं बैंक में लगा, बैंक ने मेरे को क्रेडिट कार्ड भी दे दिया कि ठीक है, तुम्हारी हम्म, 30 लाख की सैलरी है, 50 लाख की सैलरी है, ये क्रेडिट कार्ड लो, इसकी मंथली हम्म, मतलब मे बी 5 लाख की क्रेडिट लिमिट है। तो अब धीरे धीरे मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा, आई स्टार्ट रीपेइंग, तो मेरा क्रेडिट हिस्ट्री अच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो मेरा क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव हो गया। तो मैंने तो एक लोन पे डिफॉल्ट किया था ना 2 साल पहले, ठीक है, बट अब मेरा क्रेडिट स्कोर अच्छा हो गया। तो बट इसमें नुकसान बस बैंक का ही है, क्योंकि बैंक ने मतलब आपको बैंक के लोन पास दिया कोई और तरीका नहीं है रिकवर करने का। है। बैंक के पास कोई और तरीका नहीं है। कैसे रिकवर करेगा? अच्छा। पर्सनल लोन नहीं कर सकता। पर्सनल लोन छोड़ो, प्रायोरिटी सेक्टर लोन होता है, जहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है बैंक को कि गरीबों को आप 15 लाख, 20 लाख एग्रीकल्चर में, ठीक है, आप लोन दो। ठीक है। तो वो कैसे रिकवर करेगा? बैंक वो गरीब से क्या रखवाएगा? उसके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है। सो दैट इज अ क्रेडिट रिस्क फॉर द बैंक, कि उसका जो क्रेडिट एक्सटेंड किया है उसने, वो वापस ना आए। कुछ लोगों के केस में वो क्या करता है, कोलैटरल रखवा लेता है, जहाँ पे कोलैटरल रखवा सकते हैं, जैसे होम लोन लिया, ठीक है। तो होम लोन में जो होम है, घर है, दैट एक्ट्स एज अ मॉर्गेज। अगर मैं ईएमआई नहीं देता हूँ तो वो आके मेरा जो घर है वो सीज कर लेगा। ठीक है। इट विल सेल द प्रॉपर्टी एंड इट विल रिकवर इट्स कॉस्ट। मैंने कार ली है, तो कार जो है, जब तक मैंने लोन रीपे नहीं किया, इट इज हाइपोथिकेटेड इन द नेम ऑफ द बैंक। इसमें भी 3 चीज़ें आती है, प्लेज, मॉर्गेज, हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन इज फॉर मूवेबल एसेट्स, ठीक है, एंड मॉर्गेज इज फॉर इमूवेबल एसेट्स। तो इमूवेबल मतलब घर, ठीक है, तो घर इमूवेबल है तो वो मॉर्गेज हुआ, और कार मूवेबल है, कार बाइक वगैरह ये मूवेबल है, तो इसको हाइपोथिकेट करते हैं। तो यहाँ पे वो मेरी गाड़ी बेच के रिकवर कर लेगा, ठीक है। बट गाड़ी तो डिप्रिशिएटिंग एसेट है। मान लो मैंने मार्केट से खरीदी और खरीदते ही चोरी हो गई, तो जैसे ही मैंने खरीदी थी या खरीदते ही टूट गई, कुछ भी हो गया, या मैं सपोज चोरी नहीं हुई, खरीदते ही मैंने कहा कि अब मैं लोन नहीं रिपे कर सकता, तो वो बोलेगा ठीक है हम तुम्हारी गाड़ी रिकवर कर लेते हैं। बट द मोमेंट दे रिकवर द कार, इट इज ऑलरेडी द मोमेंट आई बॉट द कार, वो 10% डिप्रिशिएट हो गई ना खरीदते ही। ठीक है। तो उसमें भी बैंक की पूरी रिकवरी नहीं होती है। तो रिकवरी इंटरेस्ट से होती है। तो अगर उसको लगता है कि आप यू आर नॉट ट्रस्टवर्दी, ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा चार्ज करेगा। अगर उसको लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी हो, तो इंटरेस्ट कम चार्ज करेगा। सो दैट इज एसेंशियली क्रेडिट रिस्क। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं, आई विल मे बी नेक्स्ट टाइम, कल बैठते हैं इस पे फिर से, ठीक है, वी कैन गो इन टू डिटेल, 5 मिनट और कवर कर लेते हैं। सो ईएडी इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। सबसे पहले तो पीडी, पीडी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, ठीक है। तो मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट जो काउंटर पार्टी है, इट विल डिफॉल्ट। एंड सपोज देर इज अ स्टार्टअप, स्टार्टअप को किसी बैंक ने लोन दिया, उसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी क्या है? उसकी डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बिकॉज पहले साल में मोस्टली स्टार्टअप्स बंद ही हो जाते हैं, ठीक है।
हम्म, तो अब वो लोन देगा तो कैसे देगा, तो वो बोलेगा चलो मैं 10 लाख लोन दे रहा हूँ, 20% तुम रखो, 80% मैं देता हूँ, और फेस्ड मैनर में दूंगा। 8 8 लाख एक बारी में नहीं दूंगा, तुम बताओ किस लिए चाहिए तुम्हें, ठीक है, उस हिसाब से हम्म, दूंगा, ब्रिज हम्म, फाइनेंसिंग या जो भी, ठीक है। फिर दूसरा हम्म, है एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। व्हेन द डिफॉल्ट इवेंट कम्स, जब व्हेन इट इज व्हेन आई से कि भाई मैं नहीं दे सकता पैसे, हो गया डिफॉल्ट, ठीक है, हम्म, एट दैट टाइम बैंक ने मुझे कितना पैसा आउटस्टैंडिंग दिया है, से स्टार्टिंग में 10 लाख रुपए हम्म, दिया था, थोड़ा मैंने तीन हम्म, लाख रिपे कर दिया, और अब 7 लाख बचा है, एंड आई एम एट अ स्टेज, मतलब 10 लाख लोन था, उसमें फिक्स्ड और सॉरी इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के मेरे को 12 13 लाख देना था ओवर 3 इयर्स, ठीक है। हम्म, सो हम्म, नाउ सपोज मैंने 3 महीने में सॉरी 1 साल में मैंने थोड़ा रीपे कर दिया, और अब रह गया 9 लाख प्रिंसिपल और बाकी इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैंने हम्म, डिफॉल्ट कर दिया, तो वॉट एवर इज द एक्सपोजर, हम्म, ठीक है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मैं अब नहीं पे कर पा रहा हूँ, दैट इज द एक्सपोजर। सो हम्म, दैट इज कॉल्ड एक्सपोजर एट डिफॉल्ट, ठीक है। देन देर इज लॉस हम्म, गिवन डिफॉल्ट। इट इज, हम्म, मान लो लॉस हो गया, सॉरी मान लो डिफॉल्ट हो गया, तो अब कितना पैसा बैंक ने लूज किया, दैट इज द टोटल एक्सपोजर एट डिफॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस रिकवरी रेट। तो मान लो अगर कोलेटरल दिया होता है 10%, ठीक है, तो 10% तो कोलेटरल बेच के निकाल लेगा, तो बाकी 90% तो लॉस हो गया ना। सो दैट इज कॉल्ड हम्म, लॉस गिवन डिफॉल्ट, कि मतलब एक्सपोजर कितना था, दैट इज एक्सपोजर एट डिफॉल्ट। लॉस गिवन हम्म, डिफॉल्ट कितना है, उसका मतलब ये है कि जब डिफॉल्ट हुआ, तो कोलैटरल निकाल के या सिक्योरिटी निकाल के या जो भी मैंने एज अ सिक्योरिटी रखा था बैंक के साथ, उसको हटा के कितना पैसा मुझे बैंक को और देना है जो अब मैं नहीं दे पाऊंगा, दैट इज लॉस गिवन डिफॉल्ट, अच्छा, ठीक है। इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, हम्म, देन यू गेट हम्म, एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है। सो ये एक्सपेक्टेड लॉस जो है, ये दिस इज अ मेट्रिक दैट द बैंक ट्रैक्स, ठीक है। हम्म, ये बैंक ट्रैक करता है ये मेट्रिक। और ये जो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है, ये व्हेन यू रीड अबाउट इकरा, यू विल हाँ, रियलाइज कि वो क्रेडिट रेटिंग कैसे असाइन करता है बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट ऑफ अ काउंटर पार्टी, और जो भी अच्छा, कॉर्पोरेट है। और इसका एक ट्रांजिशन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम्म, ट्रांजिशन मैट्रिक्स में वो बताता है कि एक प्रोबेबिलिटी से दूसरे, सॉरी एक डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी से दूसरे डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी पे जाएगा, तो उसका हम्म, रेटिंग ये होगा, ठीक है। हम्म, सो ऐसे हैं। देन अगेन मार्केट रिस्क है, मार्केट रिस्क में तीन आ जाते हैं, तीन आते हैं कि कितने, इक्विटी, इक्विटी रिस्क, हम्म, कमोडिटी रिस्क, एफएक्स रिस्क, एंड इंटरेस्ट रेट रिस्क। ये चार टाइप के रिस्क आ जाते हैं। और इसमें भी ये कुछ कंपोनेंट्स है, वार, वैल्यू एट रिस्क, एस वार, स्ट्रेस्ड वैल्यू एट रिस्क, एंड एक्सपेक्टेड शॉर्टफॉल। हम्म, ये अपन मे बी अच्छा, विल ट्राई एंड डू इट द नेक्स्ट टाइम, ठीक है। हम्म, व्हाट आई कैन डू हम्म, इज, मेरे पास चारों हम्म, 2023 की फाइल्स पड़ी हैं, आई शेयर हम्म, शेयर देम ऑन व्हाट्सएप, यू कैन गो थ्रू देम। ओके, मतलब स्टार्ट गोइंग थ्रू द फर्स्ट वन, एंड मैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ठीक भी है, शेयर कर देता हूँ इस 2025 के। हम्म, तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स तो ठीक एक है, बार देख लेना, उसमें वो बेसिकली हम्म, बता देगा कि ये मेन मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। हम्म, एंड यू कैन मे ठीक बी है, थोड़ा सा स्टार्ट रीडिंग हम्म, अप, अगर लगता हाँ, इसको है मैं कि स्टार्ट कर देता हूँ थोड़ा, हाँ, अगर लगता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं हम्म, है, पार्ट वन निकालना हम्म, चैलेंज नहीं है, हम्म, ऑनेस्टली, हम्म, ठीक है। हम्म, और अगर पार्ट वन हम्म, निकल जाता है, देन यू हैव 4 years टू क्लियर द सेकेंड पार्ट, अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो पार्ट इतना, वन में कितने पैसे लगते हैं रजिस्ट्रेशन करने में? यार आई थिंक कुछ 600 या $500, $500 600 ऐसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, अच्छा, मतलब हम्म, आई आई डोंट नो कितना, मतलब हाउ बिग और स्मॉल इट इज़, बट आई थिंक ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू है मार्केट में ना। अगर आप मतलब हम्म, इफ़ यू हैव ऑन योर सीवी FRM पार्ट वन,
That really Hmm. helps as compared to not having anything. Hmm.